Model APMC Act 2003. Since agriculture is a state subject, ultimately it is the state governments that will have to reform their laws. Accordingly, Union government circulated Model APMC Act 2003. अब देखिए इसमें बहुत बड़ा एक्ट है, but basically there are two pillars of the Model APMC Act. पहला पिलर ये है that according to the APMC acts that have been passed by the state governments, they have mentioned that farmer can only sell his produce in the APMC mandi. और जिसको खरीदना है, for example, companies, so companies can only purchase it from the mandis through their commission agents. So commission agent होता है उधर, उसको hire करके you can go to the farmer और farmer से आप produce खरीद सकते हो. And if the company is not providing you adequate price, मान के चलिए राइस आपको बेचना है and राइस पर the price set by the government is, let's assume 30 rupees per kg, and if the company is not providing you at least 30 rupees per kg, you don't need to sell it to the company. Government इसको खरीद लेगी FCI के जरिए at minimum support price. So minimum support price क्या है? When you have to sell your produce और आपका adequate price, एक fair price, you're not getting a fair price for your produce, so you don't need to sell it. आपके पास जितना produce, everything will be purchased by the government at MSP. It's minimum support price. So minimum support price एक तरीके का minimum criteria है that whenever you have to sell your produce to private companies, you should sell the produce at least at minimum support price or more than that. Don't sell it less than that. पहली बात तो ये तो normal APMC में लिखा है. But now this Model APMC Act of 2003, which was again under the UPA government, जो अभी की जो government है, जब वो farm laws लेकर आए, जो 3 farm laws थे, जिसको then they repealed it, उसमें भी यही था जो कांग्रेस लेकर आया था. बेसिकली कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, ठीक है. बट अभी जब बीजेपी लेकर आया तो कांग्रेस वाले सड़क पे आ गए, तो ये क्या किया इन्होंने, और जब वो लेकर आए थे तो बीजेपी वाले सड़क पे आ गए थे. तो मामला बस चलता रहता है. The idea is, according to the Model APMC Act, कि ये जो हमने ये सिस्टम बनाया है that farmers can only sell their produce in APMC mandis and companies can only purchase at APMC mandis. According to the new Model APMC Act, they allowed that private entrepreneurs and cooperatives are allowed to create parallel markets. Mandi ke parallel markets, and in these parallel markets farmer can come and sell their produce to the private companies. ये accept नहीं हुआ, did not, because it was a model act. It was just for the state governments कि आप ये करो अपनी state में, but fortunately they didn't do it. अब जो भी है, farmer और private companies, precisely these private enterprises and cooperative societies are told that you can create parallel markets which would run parallelly to the mandis, where farmer can either go to mandis or come to your market to sell the produce. कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको यहीं पर आना है. But if you're getting a price here, you can come and sell your produce here. So this was the first provision under the Model APMC Act. It allows the private entrepreneurs to set up parallel markets to purchase and sell products directly to the consumers. ठीक है, तो परचेज आप कर सकते हो, फिर डायरेक्टली सेल कर सकते हो टू द कंज्यूमर्स. नेक्स्ट ये हो गया आपका एक. सेकंड इज मॉडल एपीएमसी में सेकंड पॉइंट वाज दैट वी हैव द कॉर्पोरेट कंपनीज आर allowed go for contract farming, to go for contract farming. तो contract farming की जा सकती है. और इस contract farming you have a big company जिसे Lay's है. अब Lay's क्या बनाता है? Potato chips है ना? Potato chips बनाता है. So what the Lay's has done is they have entered into a contract with a big farmer. और उन्होंने उसको बोला कि this is the आलू that we want. हमें ये potato चाहिए. This should be the quality of the potato. This should be the size of the potato. ये आपको सीड हम दे देंगे, सीड भी वहीं से आ जाता है. If you want, हम फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड करा देंगे. But we need 1000 kgs of these potato. तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आपके साथ. So the big corporate house has a contract with the farmer. तो फार्मर जैसे ही खेती करेगा, अच्छा जैसे ही खेती करेगा उस पे पोटैटो ही बनाएगा और उतना ही बनाएगा जितना कंपनी को चाहिए और उसको बेचेगा भी. एंड द प्राइस will be beforehand
decided by the farmer as well as the corporate house. तो price भी decide हो जाएगा. Now, the moment you have produced this potato, you don't have to go to APMC Mandi. You should directly be able to sell it to the original company जिसके साथ आपका contract है. तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना. इसी में फिर लेज का केस भी हो गया था पोटैटोज पे, जहां पर लेज ने कहा था कि जो हमने इनको सीड प्रोवाइड किया है, दे आर यूजिंग इट इन सेलिंग इट टू अदर्स एज वेल. तो उन्होंने फिर केस किया हम पर कि यू शुड नॉट प्रोड्यूस दिस पोटैटो बिकॉज ये हमारा पोटैटो है. तो शॉर्ट में ये मामला आता रहता है न्यूज में. बट दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग wherein the big corporate house can enter into a contract. और इस कॉन्ट्रैक्ट में इट्स नॉट लाइक कि इफ यू फेल्ड टू प्रोड्यूस, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर आकर आपका लैंड खा जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, उस पर जो भी उसमें आपका वल्नरेबिलिटी होगा, बट लैंड ग्रैबिंग नहीं पॉसिबल. लैंड आपसे कोई भी लेगा. फार्मर को यही खतरा होता है हमेशा कि हमसे हमारा पीपल माइट टेक अवे द लैंड फ्रॉम अस, बट इन नो सर्कमस्टांसेस कैन द बिग कॉर्पोरेट्स टेक ओवर द लैंड. ठीक है. It allows the corporate companies to engage farmers in contract farming and directly purchase the produce from the farm gate.